Hello to all. Hello dear students. So welcome to Vanik online. And आज हम discussion करिबा RRB office assistant main test रो English speed test discussion वर्तमान में start करू छु. Clear? So main set अच्छे passage ऊपर importance रहबो at least 50 to 20 mark passage ऊपर पड़े. So passage will discuss later. First let us solve the grammar portions first. कारण ग्रामर पोर्शन सॉल्व करवाटा कोन इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी पैसेज समस्तंकर फास्ट हो सेमति किछि माने नुह तने ग्रामर सेक्शन को आगो अटेम्प्ट करो तापर पैसेज को तमे जाय परिबो ओके सो गिव मी अ सेकंड हम जिबा यस हम एटू स्टार्ट करबा फोकस करा पिले So first of all we are discussing here question 126 to 128. This type of question is called sentence filler. Word filler अच्छी ए question गुड़ा कहा जिबो sentence filler. Sentence रो सेंस अनुसार ऑप्शन गुड़ा को मैच करी हमें ताको सॉल्व करिया को चेष्टा करिबा. So I am attempting question 126 now. Please follow. The first question देखो capitalism is still growing in India and टा कौन हबो टॉपिक रो आइडिया को एक्सटेंड करिवो सो हम एटी कहा विषय कथा बात करछु कैपिटलिज्म विषय रे इज नॉट इट सो बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म दैट मींस कैपिटलिज्म सहित लॉजिक को हम लिंक करबा सो फर्स्ट ऑप्शन को देखो कैपिटलिज्म इज ग्रोइंग इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज एज वेल एंड देयर इज लिटिल वी कैन डू टू स्टॉप इट वन ऑप्शन दा करेक्ट लागुची यस और नो सेकंड को देखो दिस यूनिटी एटी सेंटेंस ता कहा विषय रे कहूची यूनिटी विषय रे कहूची अच्छा यूनिटी वर्ड ता आसीबो की यूनिटी वर्ड ता कैपिटलिज्म संग रिलेटेड नाही इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तेनो हम बी से ऑप्शन को एलिमिनेट करबा थर्ड क्लासेस आर स्टिल बीइंग फॉर्मड इन अ सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट सर्टिफिकेट एटा कास्ट बेस रे सोशल डिवीजन कहूची माने दिस वर्ड इज रिलेटेड टू कम्युनलिज्म बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्युनलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म हियर फॉलो माय methodology केमिति मैं eliminate कली so I will choose only one is correct look at the options none of them is correct that means I will choose option E so 126 we will select option E as the answer clear now let us go to the next question right stay with me any doubt you can share right now 127 देखो कहा विषय कथा करछो ना स्टेट ओन्ड एयर इंडिया कंपनी विषय कथा करछो what are we talking about air india na it is not only incurring losses so here there is a keyword जेतरा हमें not only यूज करछु ता संगे जनरली हमें कोन चूज करबा but also यूज करबा and same sense रे यूज हेबा कथा ना नै I mean to say supposing मु लिखिबे he is not only intelligent okay but also stupid जदि मु एमते लिखिबी आंसर ता ठीक हबो की आंसर ता भूल हे जिवो काहे कि not only but also माने सेम पॉजिटिव माने पॉजिटिव थिबो नेगेटिव थिले नेगेटिव थिबो त माने कोन लिखिबा कथा he is not only intelligent but also smart he is not only lazy but also stupid सेम रहया कथा so this is a clue त हमें जतो देखिबा एटी सेंटेंस रे सेंस ता कोन कुछ नेगेटिव अछि त माने but also पर मध्ये ओडे नेगेटिव सेंटेंस आसीबो ए दुटा पॉइंट अछि ना नै but has also come under scrutiny for controversial incident negative sense but also अछि one हबो सेकंड ता देखो but however it shows some potential for success भूले जिवो काहे कि 90 सेंस ता नेगेटिव अछि एटी पॉजिटिव अछि आसीबनी but also grew as a white elephant is an idiom when I say something white elephant it is an idiom that means a troublesome possession ओके गोटे जिंस आनी तो देलो पर ताको मेंटेनेंस करिया रे बहुत कष्ट होए बहुत खर्च होए दैट मींस इट इज इन अ नेगेटिव सेंस माने एटा ठीक हबो बट आल्सो इज द माने 1 इन 3 चूज करबा आई विल चूज ऑप्शन सी हियर क्लियर हे गला डन नेक्स्ट को जिबा गिव मी अ सेकंड 128 को जिबा okay we'll go to 128 now let us say the Narmada Valley okay is one of the most fertile ecosystem in India so we are talking about a valley but eta the dams have changed this eta logic ne dams हम कथा करनु काटि दबा ताकू
and also boast of a number of national park and sanctuaries एटा करेक्ट हबो fertile माने ता पाखरे ए जिंस मध्ये रहइबो जदि fertile अछि brimming ର meaning होछि full of let me write here when I say something brimming माने filled up completely filled up full of sense रे हम यूज कर परिबा तो full of biodiversity with abundant माने plenty of fish birds and trees 1 and 3 both are correct that means हम एठी कोन करबा sorry 1 and 3 goes 2 and 3 correct habo that means we'll choose option D here so 128 we will choose option D done we'll go to the next one now a question ta ko solve karo this sentence is known as word replacement sentence प्रति क्वेश्चन रे तीनटा वर्ड रेड रे जे हम देखि परथबो से वर्ड जाको जदि रॉन्ग अछि माने या द्वारा हमें को वर्ड जाको हमें रिप्लेस करि परिबा इन ए मीनिंगफुल माने हमें ताको चूज करिया पड़िबो सो एटा को हम केमति सॉल्व करिबा ना दुईटा जिंस आगो वर्ड टा को देखो जो वर्ड टा एटी यूज हेछि सेटा स्ट्रक्चरली करेक्ट स्ट्रक्चरली माने एटी मानकर ओटा एडजेक्टिव रे दरकार अछि माने एटा एडजेक्टिव फॉर्म रे रहिया कथा एडवर्ब दरकार अछि एडवर्ब रहिया कथा तो पार्ट ऑफ स्पीच अनुसार देखो से वर्ड टा एटी ठीक बसछि ना नै सेकंड हमें तार इडियोमेटिक यूजेस को जीवता माने तार वोकाब रो मीनिंग अनुसार देखियो मीनिंगफुल आछी ना नाही ठीक तो देखो इफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज सेट टू ग्रो एटी ग्रो टा कोन हला वर्ब अछि ना पहिले कहले देखि वर्ब ऊपर जो वर्ड है से वर्ड टा कोन हबा कथा गोटे एडवर्ब हबा कथा एटी स्लो वर्ड टा हबो केटी वर्ल्ड इकोनॉमी टा ग्रो स्लोली केबे हबो इकोनॉमी को हम सबले ग्रो टा पॉजिटिव सेंस रे कहिबा ना नै हमें चाहिबा कि वर्ल्ड इकोनॉमी टा स्लोली ग्रो करू बोली हबनी तेन स्लो वर्ड टा एटी रॉन्ग हे गला स्लो जगह रे ग्रेजुअली आसी परिबो स्टेडीली आसी परिबो ना नै यस if the world is set to grow steadily or gradually for the foreseeable future the premise or structure synonym word achi of much of the economic policy in India would have to be transformed to meaning jaha changed and replaced to meaning mate same so this 1 2 will be correct acha mo c ta ko kahi ki choose karibini ना हमें एटी कहिबा कि वर्ल्ड इकोनॉमी टा स्लोली ग्रो करू बोले दिस सेंटेंस इज रॉन्ग तने यार आंसर होबा एक्चुअली बोथ 1 एंड 2 तमर मे बी तमर कॉपी रे एटी आंसर लिखाय थाय पारे ऑल एबीसी होबो बोली बट दैट विल बोथ 1 एंड 3 होबो बोली बट दैट इज रॉन्ग आंसर इट हैज टू बी ऑप्शन बी बोथ 1 एंड 2 क्लियर हे गला जिबा नेक्स्ट को समटाइम्स देखो आंसर उडा को सबले एनालाइज करिवो डोंट गो बाय द देखो जने आंसर अछि बहिर लिखा जे माने इट मस्ट बी ट्रू नो इट इज नॉट देयर हम तो एनालाइज करी देखिबा इकोनॉमिस्ट जो माने स्टडी करंती तो इकोनॉमिस्ट माने ए जिंस को स्टडी करि परिबे हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेमिंग कोन क्लेमिंग दैट हाइपर ग्लोबलाइजेशन ओके वाज ए वन टाइम इवेंट अनलाइकली टू रिपीटेड सब तक वर्ड ठीक अछि त माने नो इंप्रूवमेंट करबा एठी सो 130 रो आंसर वी विल चूज ई हियर डन now 131 को जिबा गिव मी अ सेकंड ओके 131 रो फोकस देखो 131 क्वेश्चन अपरे से कहिची रिकॉग्नाइजिंग द डिमिनिश्ड टेम्पो अच्छा टेम्पो रो सिनोनिम कोन बुझिबा एठी टेम्पो रो सिनोनिम हो जो पेस को पेस रे फास्ट पेस स्लो पेस टेम्पो रो मीनिंग होचे सेटा स्पीड और पेस बोली बुझिबा रिगार्डिंग द टेम्पो ऑफ ग्लोबलाइजेशन India's economic policy makers must redress redressed हबनी diminished केबे हबनी diminishing हब ing फॉर्म आसीबो ing फॉर्म आसीबो माने एटी फर्स्ट 1 हे परिबो डिक्रीजिंग हे परिबो फॉलिंग मध्ये हे परिबो बट इंडिया's economic policy maker must redress हबनी एटी एड्रेस हबो कोन डिफरेंस एड्रेस और redress बिसरे एड्रेस रो मीनिंग हला ट्राई टू सॉल्व अटेंड करिबा गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे रिड्रेस रो माने हला किछि भूल हेछि भूल को ठीक होबा पई फॉर एग्जांपल हमको पुलिस इलीगली कोन करछि ना जेल रे मते रखि देछि मो कोर्ट को गली सो कोर्ट मते कहबे नाइ तुम संगे भूल हेछि चलो ताको तमे सॉरी मागो बाइज बरी करो तमे कंपनसेशन अमाउंट करि पर कोर्ट कोन कला मो सहित जो भूल हेछि से भूल को ठीक करिया पई से कहले जे यू मे ask for redressal redressal means to correct something if it is wrong कोड जिंस तम से भूल हेछि भूल पई तमे आथरे ठीक करूछ ताको रिड्रेस करिवो ए रिड्रेस बटा एटी इनकरेक्ट हे गला एटी कोन आंसर हबो आइदर एड्रेस हबो कि अटेंड टू हबो अटेंड टू रो मीनिंग कोन ता कथा बुझे मो कहबे नर्स
प्लीज अटेंड टू पेशेंट नंबर 52 इन बेड नंबर 52 या माने कौन है बेड नंबर 52 रे जो पेशेंट अछंती जो व्यक्ति अछंती तांको कथा बुझे बोली मैं नर्स को सजेशन दूची कौन इंस्ट्रक्शन दूची ए सेंस रे आसिला ना नहीं तेनो एठी रिड्रेस वाटा रंग हे गला एड्रेस हे परिबो कि सॉल्व तो हे परिबो अच्छा कौन द ग्रोथ ऑफ द होम मार्केट which is the demand for goods and services rising from हबो कि emanating from or arising आसीबो करेक्ट हबो एठी बेसिकली को वाटा भूल अछि ना फर्स्ट दुटा वाटा भूल अछि एठी हम डिमिनिशिंग करि परिबा कि डिक्रीजिंग करि परिबा एठी रिड्रेस हबनी कोन हबो एठी अराइजिंग हबो सॉरी अटेंड हबो किबा एड्रेस हबो ठीक है स्प्रेडिंग फ्रॉम होम मार्केट तो किछि मीनिंग आसुनी माने 131 आंसर ओनली 1 and 2 that means we will choose option A as the answer बुझ परला 131 I am choosing option A as the answer next के जिबा 132 को देखिबा फाइटिंग इज एठी पैसिव रे लिखा छै माने v3 फॉर्म आसीबो त माने कोन हबो रिपोर्टेड सस्पेक्टेड रिकॉन्ड तीनटा जगह हे परिबो टू हैव halted मीनिंग कोन स्टॉप अबेट सीज सेम आछि in the Suez Canal after कोन fierce brutal and aggressive एटा मतलब जो all three हेबो 132 आंसर हमें कोन करबा all of the above कर परिबा ओके बेसिकली हमें कोन रूल अप्लाई करू ना हमें फाइटिंग हे जाय छै बोले हमें रिपोर्ट करू छु माने दैट इज इन पासिव सेंस ले v3 हेबो देन रिपोर्टेड सस्पेक्टेड रिकॉन्ड बोली कर देली क्लियर नाउ नेक्स्ट को जिबा 133 पढ़ी दबा चलो फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री माने फॉर द मोस्ट पार्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री ट्रैवलिंग लोनली कोन हबो कि ट्रैवलिंग एलोन हुए यस सर नो ट्रैवलिंग लोनली तो रंग हबो ट्रैवलिंग एलोन हे परिबो तापर कहबा कोन ट्रैवलिंग सोलो माने होची एकला जिबा सॉलिटरी मध्य एकला जिबा तो तीनटा जाक ऑप्शन ठीक लागुची बट कोड हबो वाज रेयरली डैश अच्छा was for a rare जगह रे कोन लिखि छी ओके rare and more importantly tantamount जगह में कोन लेली equivalent to equal to identical to तरंग हबो identical में similar सेंस असले नै चलो देखा जाऊ to subversion हां deviation हे परिबो वन टा ठीक हबो अच्छा क्लियर हे गला you see in 133 we will choose option A as the answer काहे के मिति करबो ना 8 सेंटेंस रो मीनिंग टा टिके हम बुझियो अच्छा कहा विषय कथा तो करछु ना हमें कहछु हमें जदी एकला ट्रैवल करबा ह्यूमन हिस्ट्री रे अनुसार देखिले ट्रैवलिंग अलोन वाज वेरी रेयर एंड इट वाज इक्वल टू कोन एस्टैब्लिश ऑर्डर मीनिंग हला नॉर्मल प्रैक्टिस तो नॉर्मल प्रैक्टिस टा कोन ट्रैवलिंग इन ए ग्रुप जेहेतु नॉर्मल प्रैक्टिस टा होचे ट्रैवलिंग इन ए ग्रुप तेनु करी ट्रैवलिंग लोनली वाज रेयर हेले नॉर्मल अनुसार तू जदी कोटे काम करिचु ना तार मीनिंग कोन हला हमें रूल को भांगीचु रूल रू डिविएट करचु ना ने त माने एठी देखो सबवर्सन रो मीनिंग जहा हला डिविएशन रो मीनिंग सया हला दैट मींस ऑप्शन 1 करेक्ट हला ना ने पर जदी ऑप्शन 2 कि ऑप्शन 3 को जीवा भूल हे जीवो सेंस वाइज काहे की ना कन्फर्म रो मीनिंग हला अकॉर्डिंग टू हले अकॉर्डिंग टू हले हबो कि ट्रैवलिंग को रेयरली कहा जाय छिबरा तामाने से अकॉर्डिंग टू रूल हे परिबनी दैट मींस 133 रो आंसर हमें केवल 1 को चूज करिबो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट आई होप यू आर गेटिंग इट करेक्ट ठीक अछि आशा करछि तमे एटा भल से बुझि जायथिबो वर्तमान नेक्स्ट को जिबा गिव मी अ सेकंड अच्छा 134 अच्छा ए सेंटेंस गुडा कोन 134 138 सेंटेंस गुडा को आजिबो फेज रिप्लेसमेंट अथवा फेज इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस फेज इंप्रूवमेंट क्वेश्चन रे तमे देखि परथबो some part of a given sentence is in bold now the point is से जगह जो bold जो अच्छे से bold part ना may be grammatically may be idiomatically wrong है पर जदी wrong अच्छे you see there are 5 options given से पांचटा ऑप्शन रो को ऑप्शन टा करेक्ट हबो we have to choose it right तो फर्स्ट देखो the UAE this week say एटा ठीक अछि ना भूल अछि चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिबा UAE is a country सिंगुलर अछि से वर्ब टा लागिबो कि सिंगुलर सब्जेक्ट पाके सिंगुलर वर्ब लागे जदि प्रेजेंट टेंस रे लिखि तांतु हमें से लिखि तांतु जदि पास्ट टेंस रे लिखि तांतु हमें कोन करतांतु सेड करतांतु फर्स्ट पॉइंट त माने एडी से भूल हे गला सेड
said हे परिबो it expected a ठीक prolonging stalemate एटी भूल गला stalemate is a noun stalemate मीनिंग हला check चेस खेल देखिछ ना नै दीटा पार्टी पाखरे किछ मोहरा नै यार राजा तारा राजा केवल या पाखे दीटा शून्य ता पाखे तीनटा शून्य के काको मारी परिबोनी तने से जो पोजीशन रे ड्रॉ हे जीवो ड्रॉ को कहा जीवो चेक और ड्रॉ को कहा जीवो stalemate STALEMATE नोट करने पिले जदि मीनिंग जानि नथिबो माने ठीक अच्छा प्रोलॉन्ग माने कोन लेंदी ले जत में प्रोलॉन्ग्ड वाटा यूज करछु लेंदी एटा एडजेक्टिव रूप यूज करले ईडी फॉर्म रा आसीबो आईएनजी फॉर्म रा वर्ब रूप रे यूज होय तेनो एटी प्रोलॉन्गिंग टा भूले गला जदि एटी प्रोलॉन्ग्ड थांता ठीक थांता तेनो हम ऑप्शन बी को काटि देबा मार्क करछो मुकुडा गडो नै काटिली सेड इट वाज बीन रॉन्ग स्ट्रक्चर वाज परे बीन के पे लागिबनी बीन तो सब परफेक्ट टेंस रो यूजेस हुए ठीक ना नहीं डी को देखो said it expected a prolonged statement in the dispute and gave no hint it would be willing to lift the blockade yes correct d टा एकदम करेक्ट लागु छी ओके a b c टोटल भूल गेला हम जानछु ना भूल गेला d टा करेक्ट अछि e टा देखि said it expected एटी आर्टिकल मिसिंग अछि भूल गेला that means 134 we will choose option d as the answer I hope it is clear to you 135 को जीवा give me a second now we'll go to question 135 now you see being an abused child bride whose drug addict husband would stab her meaning kon hode and poke kariba hela with cigarettes Patricia Narayanan enhanced hobo ki enhance mane kon बढ़े दबा failed marriage को बढ़े देला कि से suffer कला माने enhanced टा टोटल भूल हे जिवो हमें endure करे endure माने कोन bear कला सहिला suffer कला तेन endured हो endured a failed marriage एति ठीक अछि ना अद endured is in past tense it is v2 form ताहले v2 form तले एंड टेक केयर हबो कि past tense माने past tense हबो took care हबा कथा ना नै took care हबा कथा माने ऑप्शन डी को चूज करबा ए ई रे मध्ये सही भूल अछि जानि परलो so 135 I will choose option D as the answer clear बता नेक्स्ट को जीवा गिव मी अ सेकंड 136 this is देखो इंडियन पेरेंट्स हैव एडी आर्टिकल n लागिबो n माने ठीक अछि n एटा ठीक है एटा काटि देबा एटा तो हबन जमारो अच्छा n अनडिनायबल सिम्बायोसिस रिलेशनशिप फोकस ऑन दिस एडी बोले काहे कि रिलेशनशिप वर्ड ता होटे नाउन दे या पूर्व जो वर्ड आसी सेटा होटे एडजेक्टिव हबो माने द करेक्ट वर्ड इज symbiotic symbiotic हबो जानि परलो तने एकडा मते काटि देबी ना मु 1 2 गला C an undeniable symbiotic relationship with marriage one that's ए जो लिखै छी THATS तार मीनिंग कोन तार मीनिंग होची THAT that is certainly filled with love but certainly without much logic ठीक अछि ना नहीं तो सी पार्ट टा करेक्ट लागु छी मते ई पार्ट टा an undeniable symbiotic relationship with marriage one that filled with love देखिलो एडी भूल हे गला एडी that is हबो that means option C को चूज करबा so 136 I think we will choose option C here clear now let us go to 137 question को देखिबा 113 देखो be it planning a trekking adventure attending a fest or even indulging in a staycation a traveled break होबनी एटी कोन हबो सबले ट्रैवलिंग करा जिवो a traveling हबो getting it a traveling break हबो a traveling break is something is anything होय के थोड़ी is something हबो that we all look forward to ए दिटा मत देखा गला ठीक so let us now compare the options and even indulging a traveling break is and even indulging in a staycation or अच्छा एंड होबो के और आसीबो ना एटा नचे त एटी एंड अछि एटी एंड भूल हे गला एटी कोन आसीबा कथा एटी और आसीबा कथा तने वनटा करले और इवन इंडल्जिंग ए ट्रैवल्ड ब्रेक अछि भूल हे गला एंड भूल हे गला
or even indulging in a staycation, a traveling break is anything nahi, it is something habo, e da correct habo. So 137 I will choose option E as the answer. gala next को जिबा it lekha hoichi 138. You see now, an opposition politician, politician is a living person, then ta pagare kon habo, who habo, who organized the recent round of protest, had said he would likely to stand up, he would like to stand up, bhule gala, who organized bhul habo, which ta habani, who organized the recent round of has said he would like to stand but his name is unlikely to be allowed on the ballot paper. तीनटा correct laguchi, whom habani, that habani, माने एठी आंसर मते सी लागुची. 138 आंसर हमें सी करबा. ओके जीवा नेक्स्ट को 139 रो 143. This is a close test. Britain is the first choice for most Indian firms wanting a dash from which to launch an assault. कौन बुझिमा हमें इंडियन फर्म्स माने कौन चाहउछन ब्रिटेन को चूज करछन कौन पे ना से माने ब्रिटेन को यूज करिया चाहउछन कौन गोटे लॉन्च पैड जोठू तमे कौन करबा यूरोपियन मार्केट ऊपर को असॉल्ट करि परिबो अटैक करि परिबो ताहले लॉन्च पैड सेंस रे को सेंस ता आसीबो वर्ड उडा देखि दबा. फर्स्ट होचे स्पीयर हेड, अपस्टार्ट, टेरिटरी, बीच हेड. अच्छा मन रखि तो एटा को मु कोन चूज करबा ना हमें एठी चूज करबा आंसर बीच हेड. अच्छा कहीं की बीच हेड चूज करबा, बीच हेड रा मीनिंग एटा बुझी परिबा आइडियल लोकेशन. खातारे नोट कर दिया पिले जदि म एठी म बीच हेड लिखिली लिखिबार सेंस होचे कोन ना आइडियल लोकेशन इन वार रे अटैक करिया पे गोटे एडवांटेजेस पोजीशन दरकार ना एई जगह रो ठिया है कि मो शूटिंग ता करबी. ठीक तो एठी आइडियल लोकेशन सेंस रे हमें बीच हेड वर्ड ता को हम चूज करबा. स्पीयर हेड रो मीनिंग कोन एज्यूम द लीडिंग रोल ताको कहै छै स्पीयर हेड बोले बुझ पाला. अपस्टार्ट माने एम्बिशियस पर्सन सेंस रे वर्ड ता यूज हो. क्लियर हे गला. तने प्रथम आंसर में बीच हेड कलो नोट करा पिले. वर्तमान जिबा आगो को. ओके see here. okay that is not just माने आमे इंडियंस माने जो ब्रिटेन को चूज करा पछे एक कारण थिबो. से कारण कोन not because of the English language is not the major reason but also because all London offers a dash of services. लंडन एमिति के सर्विस प्रोवाइड करछि जा द्वारा कि से फास्ट होय छै ताले बहुत भलो सर्विस प्रोवाइड करथबो. तो से सेंस रे हमें कोन यूज करबा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करथबो. से सेंस रे व्हाट आछि ना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूछि बोले हम यूज करछु. ताले ऑप्शन देखि द वर्ड गुडा को एठी देखो हम चूज करबा पावर हाउस माने जानि पछे द हाउस व्हिच इज पावरफुल. पावर हाउस माने कोन एक्सीलेंट सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज सेंस रे आसले. तो 140 रो आंसर हम डी करबा. ओके नाउ यू सी yes there it is. हम कहि परबा एठी पावर हाउस ऑफ फाइनेंशियल एंड एलाइड सर्विसेज. if Britain has an untidy break then the EU separate हे गला. companies may be forced to relocate to Europe and in fact some of them are already doing so. beside the conservative manifesto लेखा छै ना एठी कोन बुझिलो conservative मीनिंग एठी होची conservative party of London. conservative party इलेक्शन रे कोन करे तार गोटे मैनिफेस्टो टा लॉन्च करे तो ताको कहा जाय छै conservative manifesto. रिफ्लेक्टेड माने इंडिकेट कला मे माने कोन ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर जो थिला ताको थेरेसा मे सेंस से कहा जाय छै. थेरेसा मे रो हार्ड लाइन रो मीनिंग कोन जे डिस्प्यूटेड इमिग्रेशन स्टांस माने इमिग्रेशन रो से कोन अछि अपोजिशन रे अछि. दैट मे इन्वॉल्व हायर एंट्री फीस फॉर इंडियन स्किल्ड वर्कर एंड स्टूडेंट. माने मे कोन कोछि इंडिया जदी इंग्लैंड को आसीबो माने अधिका पैसा दरकार पड़े एंट्री तेनु कर ताको हार्ड इंस्टेंस बोली कहा जाय. इट मीन दैट मींस अनफ्रेंडली हैला. her first foreign trip as the prime minister was to India but she displayed but माने कोन सेंस तो नेगेटिव हे जिवो dash arrogance. नेइव करबा नेइव माने कोन परिस्थिति न बुझी खाली arrogance देखेला. yes by announcing fresh corps and Indian student. corps meaning होछ कोन ban or sanction. just before coming here to dash more trade कल्टीवेट हो नुआ ट्रेड करिया को आछि मात्र इंडिया से तो केमि बिजनेस रे डील करिया को देसन डील करलेनी ना. इंडिया से तो तुम ट्रेड करिया पे आछो इंडियन स्टूडेंट मानक ऊपर तुम सैंक्शन करछो. इंडिया केबे पॉजिटिव व्यू नबो कि
नबनी तेणुक सी कौन है तार जो बिहेवियर को तार जो एटीट्यूड को विथ रेस्पेक्ट टू हर फॉरेन पॉलिसी आमे तो कहबा नेव एरोगेंस एरोगेंस कला किछि परिस्थिति न बुझिकी between May who has always taken a dash view of the world and the professional Jeremy Corbyn British voters had related uninspired choices. The resulting hung parliament has introduced a new level of uncertainty in Britain. ताले कौन हबो ए दी जण जाकर व्यू टा कौन हबो पॉजिटिव सेंस रे कहनी हम आंसर देबो ब्लिंकर्ड व्यू र मीनिंग हला पार्टीशन व्यू पार्टीशन र मीनिंग कौन हबो जे पार्टीशन र मीनिंग करी पूरा रेशियल व्यू नैरो व्यू biased view ए सेंस रे हम वर्ड चूज करिबा सो 139 टू 143 इज क्लियर आगो को जीवा वर्तमान गिव मी अ सेकंड 144 148 होचे एटा पैसेज होचे नै पैसेज जो हम परे करिबा ओके अच्छा एठी देखिए 149 टू 150 टिके देखिबा सो व्हेन आई टॉक टू 149 150 ए क्वेश्चन रे कोन कहै छी ना देखो प्रति सेंटेंस रे ए बी दीटा जिंस ए सेंटेंस रे गोटे कोन थाए ना गोटे इडियम टे देछि इडियम रो मीनिंग टा कोन हम बुझाओ पड़िबो सेकंड सेंटेंस रे ए इडियम रो मीनिंग अनुसार हे छि ना हम चूज करबा पड़िबो सो एठी लिखा है जे कैलकुलेटेड रिस्क माने टेक सम रिस्क सिंपल मैनर रे जे कैलकुलेट टेक रिस्क विथ पॉजिटिव होप हम भाबिया जे ए रिस्क कले तार आउटकम टा पॉजिटिव हबो बुझि पले ना नै ताको कहजो कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ट एग्जांपल मो जे सर मते सैलरी दउ नथि म कहे हां मिल जो 4टा बेलू केते देबे सर फुल सैलरी देबे समान 3टा 45 रे गोटे के सांग आसी कहबो सर भाई ब्रदर मते टिके इमरजेंसी दरकार थला 700 टका पठेबो तो मु कोन देखिबो मो पर पॉकेट रे पैसा नै मात्र मु जानि छी जे 4टा बेलू मते कोन पैसा किछि मिल जिवो तो मु कोन देबे ना कहबे हो ठीक अछि आ ने 700 देई परबिन तते मु 500 टका देले कैलकुलेटेड रिस्क विथ द होप दैट ताको 500 टका देले मध्य एक मते 3 मिनिट भीतर पैसा टा मु रिकवर कर परबी प्लस सांग मते मते देई देबो डिपेंडेबल पर्सन तो जिनसेटा बुझियले ना नै कैलकुलेटेड रिस्क का मीनिंग होची सया ताले सेकंड सेंटेंस रे क्या तो कैलकुलेटेड रिस्क का मीनिंग टा हम कोन बुझिलो ना वी टेक रिस्क विथ द कोन आइडिया दैट समथिंग पॉजिटिव विल हैपन किछि पॉजिटिव हबो या भाबी हम कहिबा consumer seems to be aware that governments are sanctioning the use of cadmium with alternative exist माने एटा गवर्नमेंट ठीक कला ना भूल कला गवर्नमेंट जानि के cadmium टा जे विष इट इज अ पॉइजन अच्छा पॉइजन तो लोक माने को दउचु केते बेले ना जदि तार अल्टरनेटिव अछि माने तू कैलकुलेटेड रिस्क न मुंडो वाला काम करचु तो ए इक्वेशन रो मीनिंग जे इडियम रो मीनिंग ता सेंटेंस संगे मैच करनी काटि दबा वन टा को बुझी होची ए सेकंड को आसा ए चाइल्ड रिसर्च के ओपन ए कैन ऑफ वर्म माने सोर्स ऑफ ट्रबल कैन ऑफ वर्म रो मीनिंग हला सोर्स ऑफ ट्रबल सब ट्रबल गुडा दर दर के आरंभ होले किंदी गोटे तले कोन लिखा होची when growth rate 0.7% and 1% the Finnish economy is still in a difficult condition माने कोन कैन ऑफ वर्म हैला कि ना कैन ऑफ वर्म मीनिंग हला सब ठीक चलतेला हठात कोन हला ना गोटे नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट हे गला यार तो 2 वर्ष हला देखो जो ग्रोथ रेट खराब थला तने सडनली किछि हे नै तर बैड कंडीशन ता ही कंटिन्यू करछि न को एलिमिनेट कर देली क्लियर हे गला now focus on this waiting with bated breath meaning hala ANXIOUS anxiously waiting nervous है कि जगिच पूरा अननिश्वास है कि जगिच hold your breath he is the winner एमते कहछ ना नै तने एटा गोटे anxious breath रो मीनिंग हला होची anticipate करू जो with the bated breath for example देखो Europe will be watching the first round of finance होबो के एटा फिनलैंड हो ओके Finland's presidential election anxiously match करछु नै कहलो wondering whether the most consequential national vote in decade could shake the EU to its core or not तो anxious sense टा मैच कला केवल सी हबो only 3 clear बर्तमान नेक्स्ट को जिबा give me a second look at 150 so question 150 को देखिबा वर्तमान तो कौन लिखा है फर्स्ट while on one hand several countries seem to have shut their doors for India with stronger immigration laws Ireland is treading on a different path meaning है doing something different repercussion meaning है consequence मन रखिता another repercussion means another consequence of leaving the Paris agreement okay कौन ही परे स्ट्रेमन कहउचंती is potential retaliation from other countries who could either leave the Paris agreement or punish the US in some way for leaving the agreement
ताले एटा डिफरेंट पाथ है कि एटा गोटे कंडीशन को दोची ए जो जिनसटा अछि ए सेंटेंस पई को आइडियमटा हबो एटा लिखा हबो टिट फॉर टैट तो जेमति करबे मु तो सेमति करबी यस और नो कारण रिटेलिएट करछि पर कंट्रीज माने जदि यूएस एग्रीमेंट लीव कला ताहले आमे मते पेरिस एग्रीमेंट लीव करबो तो एटा टिट फॉर टैट आछि एटी ट्रेडिंग माने डिफरेंट पाथ हबोनी ना ट्रेडिंग माने डिफरेंट पाथ किंदे हबो three of my brothers are scientists but I am trading on a different path I am a poet I am a writer तो हम कौन किसी different कली ना नहीं तो सेंस टा बुझो ओ सेंस रे व्हाट यूज होची क्लियर now give me a second okay so now आमे जीवा सेकंड को फर्स्ट ता तो हबनी एठी गोटे जो वर्ड लिखा है सेटा होचे बैप्टिज्म ऑफ फायर एटा सब बळे करेज सेंस रे यूज होची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज ड्यूरिंग ए क्राइसिस ए सेंस रे हम व्हाट यूज करबा ना नहीं I became a man when I served for the military and fought in the Kargil war. कोने नहीं कारगिल वार युद्ध कला पर सेटे पूरा रियल लाइफ एक्शन रे मु कोना मो भीतर किछ गोटे ट्रांसफॉर्मेशन हला डेवलपमेंट हला कहि परिबि जे इट वाज ए बैप्टिज्म ऑफ फायर बोली कहि परिया लिखा जे केमते कहलो the actress recalled the difficult days that followed her spreading her feminist message to the global audience describing as baptism of fire माने the actress is telling about something she did what did she do she was spreading her message about feminism to a global audience now it is not an easy thing it is a difficult thing it's not very easy normal persons we cannot do it तो से पॉइंट रे कहला से जो अनुभव से कले ना ए अनुभव ता ताको मैच्योर करे देला तेनो describing as baptism of fire क्लियर हे गेला से सेंस रे बीटा को देखो as they matched onto हबनी एठी आंसर हबो MAR CH it march onto company march कहछ ना नहीं as they marched onto the battlefield you could see all the uniformed boy it ununiformed नहीं एटा हबो uniformed हबो okay I am very sorry beta for some spelling mistake एटा uniformed कहबो all the uniformed boys become men boys माने men हो चंदी as they experienced their very first sighting of bloodshed and war जोटा हम डिस्कशन करथिलु 2% टोटल करेक्ट अछि बैप्टिज्म ऑफ फायर हे गला third painting the plants with a broad brush ର meaning ହେଲା give only a very general idea not a very specific example yes or no sir मोर लग्न रे बृहस्पति जी कोन हबो मु कहबी भलो हबो एवं बहुत भलो हबो कोनटा बुझिला कोटे मु जनरल आइडिया टे देल ना नै पर जदि मु स्पेसिफिक कहतंती लग्न रे बृहस्पति थिले मे बी तर प्रमोशन हबो नाउ दिस इज a specific statement yes or no so when I say painted his plan with a broad brush I mean you are only sharing a general idea you are not giving any specific information that is the point so now look at B now when asked how she would stabilize the economy the candidate resorted to vague claims match color nahi vague claims mane kichi specific nahi uncertain general idea dala that means 2 and 3 will be correct we will choose option C so 150 again we have chosen option C clear चला पड़ता नेक्स्ट को जीवा ओके 151 रो 155 we will discuss now at एजेंसी रे से कोन कहै छी फिलर्स कहै छी ना जो दिरा वर्ड चूज करबा एटा दिले जका सेंटेंस रे मैच करबा सो देखो it is harsh and sad reality that when bindis and bangles are exempted from tax in the GST कोन हबो GST स्कीम हे पारे GST पॉलिसी दहि पर GST रूल हे परबनी आइदर GST स्कीम हबो कि GST रेजिम हबो GST पॉलिसी करिबा मनकर हो ठीक अछि लेट अस चूज बिटवीन ऑप्शन बी डी एंड ई हेलो सेकंड को देखिबा पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट फॉर वुमेन अट्रैक्ट ए डैश कोन हबो मस्कुलर 12% के हबो मस्कुलर ता मनुष्य पाखे लागिबो त डी टा कटि गला स्टाउट माने हला शॉर्ट इन साइज 12% शॉर्ट इन साइज कोन हबो हेफ्टी रे मीनिंग हला ह्यूज एडी हेफ्टी काहे कि ना मते केते परसेंट कमीशन दरकार ना 12% दरकार बिल्कुल 12% hefty माने हला इट्स मोर देन व्हाट इज नॉर्मली गिवन तेनु एडी सेंसर हम कोन करे एडी hefty वर्ड चूज करिबा क्लियर हे गला सेकंड सेंटेंस देखो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रेजिम माने शासन काल द रॉयल कोर्ट बोस्टेड ऑफ सेवरल रेसलर्स पहलवान माने hefty भारी हेबे ना नै हु वुड रेसल फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ द किंग एंड द courtiers बी को चूज करिबा 151 we will choose B as the answer done चल नेक्स्ट को देखिबा ना एठी आसीबो नै एठी आसीबो the 152 it is poor situation
where a state that is dash to dash the welfare of the people does things that are detrimental to them. एटी मन रखिता detrimental meaning है harmful. मन रखिता पिले जेतरे मते detrimental लेखिली एटी detrimental meaning होची harmful. Clear हे गला. So कोन हबो the animal dash that supposed हबो एटी assume तो हबोनी supposed that the predator had given up its tail unbeknownst that the lion had decided to pursue it. माने कंद follow करिवो. So 152 ର आंसर हमें D करिवो. Clear? Next को जिबा वर्तमान give me a second. Those who dash verb दरकार माने कोन होबो जे एटी आंसर आइदर B आसीबो C आसीबो नले D आसीबो. Yes or no? Camp करि परिबो dwell करि परिबो encamp करि परिबो. But second देखिबा all those who reside at this dash seems to dash from malaria suffer from malaria. Direct answer है B करिबा. 153 answer B easy. Okay, next को दिबा वर्तमान 154 को जिबा. When I go to 154 second sentence को देखो पढ़े को हबो for people more accustomed to dash the water experience करना ताको कोन करछ स्टडी करछ माने ऑब्जर्विंग हे परिबो सॉल्विंग हे परिबो ओके रिसर्चिंग हे परिबो फर्स्ट वर्ड सब तो ठीक लागु मते देन experiencing first hand the dash at Evans Bay posed bit of a challenge. एडी कोन कर Evans Bay रे कोन करियो त पानी को डाइव करियो नले प्लंज करियो. Okay, that means answer either A नले D ए दी रहतु चूज करिया अछि. फर्स्ट सेंटेंस देखिबा the Cassini satellite which has been dash Saturn satellite कोन कर Saturn को एक्सप्लोर करियो कि एडी हबो studying these fast warriors will destroy itself by taking a dash plunge हबो आंसर. त माने 154 आंसर त हम कोन करिबा D करियो. Clear? एबे जिबा 155 को देखो. So when I look at question 155 okay कौन लिखा है लिखा है expert says the US economy has become dash and a continued lack of action dash pro-growth policy is to be blamed नहीं. अच्छा ठीक है the more dash in the market the more you dash in your marketing efforts. तो आंसर कौन होबो आंसर देखिबा US economy has become कोन नेगेटिव वर्ड हेतिबो कारण तुम ब्लेम करछो नेगेटिव वर्ड हेतिबो बले सी टा काटि देबा रोबस्ट तो बिल्कुल होबनी बोल्ड तो बिल्कुल होबनी. आंसर A B और E ए तीन डाक्टर पूरा चूज करिया अछि. अच्छा has become sluggish and a continued lack of action and कोन लिखा है conserving तो केबे हे परिबनी policy is to be blamed. wrong answer. conserving टा कोड एडजेक्टिव रूप यूज हेबनी कंजर्वेटिव ले तांदा एकड़ो काटि दबा. has become volatile and n पर केबे लेटी वर्ड टा जो आसीबो vowel sound आसीबो reticent तो आसीबार चांस नै. ओके a और n दे जने कि reticent बना जे shy नाही ताडो बेटर हो stagnant करिबा. ओके सो आई थिंक 155 आंसर विल गो फॉर ऑप्शन E. ओके stagnant र मीनिंग हला not growing तेन करे ब्लेम करिवो मार्केटिंग प्रो ग्रोथ पॉलिसी इज टू बी ब्लेम्ड. डन. नेक्स्ट को जिबा ओके 152 60 बतन हम स्टार्ट करिया कोन पैसेज गुडा को. दिस पैसेज इज अबाउट फूड एटा फूड विषय रे कहा जाय छी स्पेन विषय रे कहा जाय छी. द कन्वर्सेशन द ऑथर इज हैविंग विथ अ पर्सन बेन कर्टिस ओके ता विषय कहा जाय छी. 156 रो आंसर प्रथम में देखो according to the author which of the following is a sign lunch has gone well. खाइ साले पले पिला माने बस्तिबे टेबल ऊपर लिखाइ दिबो that means D करिबा. 156 I will choose D. What did Ben Curtis suggest he suggested having lunch together haba B haba. 157 158 which of the following is correct about that big meals inspiring conversation ठीक हबो. spending time after you have finished eating 1 and 3 हबो C हबो. ओके लास्ट एटा क्वेश्चन अछि देखिबा. what happened in the aftermath of the
ସେମାନେ कौन करिवे बी करिवो दे स्टार्टेड हैविंग लंच मोर फ्रीक्वेंटली हेबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हैविंग ए ग्रेट लंच एटी हेबो राइट कंपनी बी ओनली बी ए हेबो 160 टा ठीक अछि सो गोटे पैसेज सरला आउ दुईटा पैसेज बाकी अछि लेट अस गो okay first which of the following is true with respect to the passage टा पढिबो तीनटा जगह जिंस करेक्ट अछि एटी all 1 2 3 करिवो 121 ର आंसर ई करिवो all of the above हबो 122 हमें जतले what happens if we think something should be easy when it is hard हम ऑफसेट हे जिबा likely to give up हबो फ्लाउंडर टा हबनी 1 and 3 हबो that means b हबो 122 ର आंसर हमें b करिवो नेक्स्ट को दिबा 123 से पचाचे which of them could be adjusted to be in line माने एटी हबो when you know convince b तो हबनी एटा a हबो 123 रो आंसर टा को हम a करबा ओके नेक्स्ट को जिबा वर्तमान appropriate title कोन है परिबो पैसेज रो appropriate title हबो c a way to plan if you are bad at planning 124 आंसर हम c करबा 125 सेकंड पैराग्राफ रे आईडिया कोन हबो तारो informative हबो e हबो आंसर ठीक अछि one more passage remaining okay give me some time हाँ जी असल ऐड देखियो 144 ରୁ स्टार्ट करियो आंसर ओके फर्स्ट क्वेश्चन which of the following is true it all of them are true haba 144 ro according to the passage what could be driving the higher divorce rate the person okay तेनु आंसर करिवो the kind of person a haba next को जिबा 146 what is the tone of the author in para 3 से कोन करछि speculative picture suggestion introduce करछि ई करिबा which of the following can logically and contextually follow eta none of the link करिबा it is a difficult trick question जदी sure नहीं छाडी दबो 148 को जिबा वर्तमान next according to the passage okay which of the following could be reason to favor a small age group से कोहे थिबो गोटे होची फ्री बस passes हबो ओके सेविंग मनी फ्रॉम कंबाइनिंग बिग बर्थडे पार्टीज ए बी हबो ए बी माने डी टा को चूज करिया 148 आंसर हम डी करबा we have two questions left no this is over that means passage complete हे गला I hope you have got your answer I will see you next class thank you